51 झालंय. Hello everyone. Welcome to this magical chapter, magical relationships. This chapter is special because it is my favorite. And if you ask me, then I'll say that I have really worked the maximum time of my life on relationships. And after getting coached by many wonderful coaches, after attending many nice courses, I have just realized that we complicate certain things which are simple to understand, but still, according to most of the people in this world, relationships is like the most complex thing of our life. Do you agree with it? If yes, then type yes in the chat box. Yes. Why do we find relationships as complex? Because human mind is dynamic, and the way human mind works is absolutely unpredictable many times. Sometimes we think that 1 plus 1 equal to 2 and 2 plus 2 equal to 4. This is as simple as it is. But relationships don't work on the basis of logic. And many times we fail to understand certain people and we think that this is so illogical. This behavior is illogical. And so we fail to understand them. We fail to understand ourselves, and we keep certain judgments and conclusions in our mind about these people. Even we get stuck to certain opinions. तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज में या आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, बच्चों के साथ कोई ना कोई एक कंक्लूजन पकड़कर हम रखते हैं और फिर उसी कंक्लूजन के बेसिस पर वी स्टार्ट लुकिंग एट देम. सो लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट हियर. आर यू रेडी फॉर द एक्सपेरिमेंट? See, the main instruction is this experiment involves a glass and some water. But remember that now you might be wondering or you might be guessing that this experiment is about half full, half empty. No, this experiment is not about half full or half empty glass of water. It is about something else. So just have your open mind and get rid of all those judgments about this experiment. तो ऐसा मैं मानती हूं कि आप एकदम फ्रेश पर्सपेक्टिव से इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे. आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. आपको आंसर करना है. अभी कैन यू सी दिस ग्लास ऑफ वाटर? क्या दिख रहा है आपको इसमें? यू कैन टाइप. पानी दिख रहा है. ओके, थैंक यू. तो अभी इस एक्सपेरिमेंट के काफी सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं. जैसे हमें पता है कि बहुत सारे माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग में ये होता है हाफ ग्लास फुल, हाफ एम्प्टी, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड. बट if we don't want to become a victim of positive negative, we don't want to fall into that trap, then let's be realistic, right? So realistically, this is a glass and it has some water. Agree? Great. So if it is a glass of water, what do you see here? You see water, right? But then there is some air also. Can you see that? No, we cannot see air, but it is there. Water is there, correct? Now the next step of the experiment. Now that I have this glass of water, I really like to look at it through some colored glasses. So I choose to take this. Now, can you see this? Now, which color can you see here? Can you type in the chat box so that I know? Red, okay. Red. I see it as orange, you see red, okay. What will happen if this glass, this color is blue? What will happen then? किस कलर का ये ग्लास दिखेगा? ब्लू कलर का दिखेगा, करेक्ट? अगर पिंक कलर का है तो पिंक दिखेगा. यस, करेक्ट. तो आपको पता है मेरे पास ये रेड कलर का है, आपके पास, आप में से कुछ लोगों के पास ये ब्लू कलर का फिल्टर है.
कुछ लोगों के पास पिंक कलर का है, कुछ लोगों के पास येलो कलर का है, कुछ लोगों के पास ऑरेंज कलर का है। और जिस कलर का फिल्टर आपके पास है उस कलर का आपका ये पानी का ग्लास दिख रहा है। अभी इसका रिलेशन हमारे लाइफ में कैसे है? ये ग्लास ऑफ वाटर मतलब आपके लाइफ में जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स है, जो लोग हैं, समझ लीजिए वो है। हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है? वी विल कंपेयर दिस ग्लास ऑफ वाटर विद अ पर्टिकुलर पर्सन। सो अगर इस ग्लास में आधा पानी है तो पानी हमें दिख रहा है। सिमिलरली लोगों की जो क्वालिटीज है एविडेंट है, जो कॉन्शियस माइंड से हम एनालाइज कर सकते हैं, वो हमें दिखता है। लेकिन जो आधा ग्लास है, जो आधी उस व्यक्ति की पर्सनालिटी है या उनकी थिंकिंग है या उनकी फीलिंग्स है, वो हम नहीं देख सकते हैं। तो वो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। वी डोंट नो एवरीथिंग अबाउट एनी पर्सन। Why don't we know? Because most of these things for that person have come from the past. और उनके दिमाग में इतने सारे कंक्लूजन्स है, जजमेंट्स है या एक्सपीरियंसेस है जिससे उनकी पर्सनालिटी बन चुकी है। और इसमें उनका दोष भी नहीं है क्योंकि हम भी वैसे ही बने हैं। हमारे अंदर भी कुछ चीजें हमें पता है, कुछ चीजें हमें दिखती है, कुछ चीजें हमें नहीं दिखती है, बट इट इज देयर। तो ये कहाँ से आया है? ये भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, जो हमें जजमेंट या कंक्लूजन क्रिएट किया है कि इस तरह से बिहेव करने से ये होगा, उस तरह से बिहेव करने से वो होगा। तो हम एक पर्टिकुलर सेफ बिहेवियर पैटर्न को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार का बिहेवियर मैंने किया तो मेरे लिए डेंजरस है, बट इफ आई बिहेव इन दिस पर्टिकुलर वे, generally I don't get opposition from other people. This is the reason why some children who get punished for a certain thing in the childhood, they tend to avoid that activity or anything related to that activity, even if they grow old and there is no one to punish them. हर इंसान जो है ये एक कॉम्बिनेशन है कुछ विजिबल गुणों का और कुछ इनविजिबल गुणों का। तो अगर मेरे पास एक फिल्टर है जिसमें से मैं ये सोचती हूँ कि ये जो इंसान है मेरे लाइफ का, ये शायद फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर चाइल्ड। माई चाइल्ड इज लेजी एंड स्लो। अभी मेरे पास ये जो फिल्टर है ना, ये फिल्टर बना है लेजी और स्लो का। नाउ आई विल ऑलवेज लुक एट माई चाइल्ड फ्रॉम दैट फिल्टर, थिंकिंग दैट ये तो बहुत लेजी है, बहुत स्लो है, इसका क्या होगा? वॉट विल हैपन टू हिज फ्यूचर? हाउ कैन आई चेंज हिम? यस, आई एम कंसर्न्ड एज अ पेरेंट कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ने बदलना चाहिए। बट वेन आई लुक एट माई चाइल्ड फ्रॉम दिस फिल्टर, आई कैन नॉट सी द इनविजिबल पार्ट, or I cannot see the pure glass of water as it is. I cannot see the reality because I am using this filter. The more and more I use this filter, the more and more I fail to understand my child. So even if I say I love my child, I love my parents, I love my partner, so yes, love is there is no doubt about it. But then, is there any no filter space in your day with them when you can look at them as a human being as they are, just like this crystal clear glass of water? Do you look at them sometimes? You may say yes, but many times we forget to do that. Why do we forget to do that? क्योंकि हमारे माइंड में भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस है उनके बारे में जिससे हम कंफर्म करते हैं और हम उसमें बिलीव करने लगते हैं कि ये इस तरह से है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक ही इंसान, कोई भी एक इंसान लीजिए और उनके रिलेटेड 10 लोगों का इंटरव्यू लीजिए, 10 लोग 10 अलग अलग बातें बता सकते हैं वो एक ही इंसान के बारे में। कोई कह सकता है कि हाँ, कोई कह सकता है लेजी, ये तो लेजी बिल्कुल नहीं लगता है। कोई कह सकता है नहीं, लेकिन हमारे साथ उन्होंने बहुत फास्ट काम किया था। या कोई कह सकता है ही इज अ वेरी वेरी हैप्पी एंड जॉली पर्सन। कोई कह सकता है कि वो तो बहुत ही सीरियस इंसान है। So if you can observe, one person has so many layers of personalities, or there are so many layers of different qualities to the same person that it is really difficult to know everything about them.
फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया का पूरा नॉलेज हमें होना चाहिए, अभी तो बहुत आसान हो गया है, चैट जीपीटी है, गूगल क्रोम है, कोई भी टॉपिक लो, उस बारे में सिर्फ आपको टाइप करना है एंड ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. बट इज इट पॉसिबल टू नो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इन दिस लाइफ टाइम? फॉरगेट अबाउट अ फ्यू डेज और ईयर्स, लेकिन हमारी जितनी भी जिंदगी बची हुई है, आपको क्या लगता है कि हर विषय के बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं? यस और नो? नॉट रियली. सो it is not easy to know everything, right? But then it is easier to understand that certain things we can master. We can master one or two topics, one or two subjects. We cannot master everything, but we can, if someone asks you, can you understand a painter, why he paints? Yeah, we cannot know and become a great painter in one lifetime, but we can understand and appreciate that person and his skills, correct? Similarly, we cannot know, and it is not important and necessary to know everything about people, but what is most important is to understand them, Now, why is it important to understand them? Because every person is coming from his or her past experiences. Every person has issues to deal with, and you don't know every person's childhood. We don't know what they are coming from. And so it is better, easier, and the best way is to understand them so that we can create a heart-to-heart connect. If a person is behaving in certain way, we can just try to know what is the reason that they are behaving in a certain way. Most of the times, means about 90% of the times, you will find out that the intention of the person is good. Intention of that person is good, but we fail to go till that depth, and we are still judging the surface. We are still judging the surface, but the color of the surface is contaminated or changed because of the filter we have, so we cannot see the real person. And this is the reason why we cannot create heart-to-heart connect with people. Now, why is it important? In today's time, everything is actually very easy. Transportation is easier than ever. It is a golden era because human beings are living their bestest lives. Women have freedom and independence. All the opportunities of education and earning money are available. Information is available on your fingertips. There is advancement in technology. Whatever you want, you can just order and it will come to your house. Life has become so easy that human beings 100 or 200 years ago wouldn't have imagined this kind of life. But then with this advancement, what is happening? Do you know what is the biggest global issue? The biggest global issue is real connection of people with each other. And because of this, there is a social divide. There is a social divide which is disconnecting people from each other. So this social divide is making me distanced from my fellow beings or my family members. I think means all of us, we think that our relationships are good. Yes, on the surface they are good. But is there any real heart-to-heart connect? Do you provide them space to be who they are when they are around you? And according to statistical data, the number of people who die by suicide is more than the number of people who die natural death or by natural calamity or any other diseases or accidents. This is alarming. And when there is a social divide, there is a self-divide as well. Why self-divide? Because when you don't feel connected with others,
there comes a time when you start feeling lonely. And when you start feeling lonely, you get disconnected from your true self. Your smaller self gets active. And that is the time when you go in that pit of low emotional zone. And then in that zone, by like attracts like, you attract breakdown in your money area, in your career, in your relationships, and in your health also. And that's why they say that relationship is like a boat. Even if you have a lot of money, you are the wealthiest person in this world, but you don't have any one or two key relationships where you can be yourself or you feel loved and you love them, you cannot be a happy and fulfilled person. And if you can relate to it, you will also find out that most of the reasons of our unhappiness don't lie in having less money, but it lies with having unfulfillment in relationships. So today is an opportunity to create that fulfillment and to bring some spark and to charge up our relationships. So this relationship might be with your spouse, with your parents, with your child, with your friends, or anyone. I hope that you are ready with 3 photographs of your key relations. If you don't have, you can open your gallery of the phone and you can just find out with whom you want to create a breakthrough in relationship. So let's move forward and let's see what author wants to tell us. Can you see my screen? Okay. So, magical relationships. This is a picture where there is a photo. यहाँ आपको एक photo दिख रही है. And there are people. 3 photographs you can see. 1 photo, 2nd photo, 3rd photo. There is a copy. That means it's an indication that we have to write gratitude. So what type of gratitude are we going to write? That we will see today. And then there is a sparkle of magic, which shows or which indicates that if you do this exercise, it will certainly bring magic into your relationships. Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? अगर हम ये सोचे कि मेरी रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही है क्योंकि वो जो आपको पता नहीं है हमारे स्पाउस कैसे है, आपको पता नहीं है मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, या फिर आपको पता नहीं है मेरे बच्चे इतने ज्यादा बिल्कुल ओबेडिएंट नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, मुझे समझ में नहीं आता उनसे बात कैसे करनी है. सो अगर हम देखें तो हमारे पास हर इंसान के बारे में एक लिस्ट है कि उनके अंदर कौन सी क्वालिटी नहीं है या कौन सी खामियां हैं. इस हिसाब से अगर देखें तो इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके बारे में उसके फैमिली मेंबर्स कहें कि ये पूरी तरह से परफेक्ट है और हमें तो इनसे कोई कंप्लेंट नहीं है या इनमें सारी क्वालिटी सिर्फ अच्छी है. इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? एब्सोल्युटली नो. As they say, beauty lies in the eyes of beholder. Similarly, there is no perfection that exists in the nature. समझ लीजिए कि आप एक जंगल में गए. क्या आपको लगता है कि वो जो जंगल है उसमें 100 पेड़ पूरे एक जैसे होंगे? बिल्कुल भी नहीं. अलग अलग टाइप के पेड़ होंगे. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी आम के बगीचे में गए हैं, सारे आम के पेड़ एक जैसे दिखते हैं? हर पेड़ का शेप अलग होता है, हर पेड़ का साइज अलग होता है. सिर्फ एक ही पेड़ में देखो तो उसमें भी हर पत्ता जो है वो अलग अलग हो सकता है, हर फल का शेप एंड साइज अलग होता है. तो नेचर हमें एक्चुअली एक मैसेज देना चाहता है कि नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, नो वन इज परफेक्ट. यू कैन एम फॉर एक्सीलेंस, बट नथिंग इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट. We get this message from nature and that says that accept the things as they are. जब हम पेड़ों की तरफ देखते हैं तो क्या हम ये कहते हैं ये ना ठीक से
बना नहीं है, इसकी ये जो पत्ता है ये साइड से होना चाहिए था तो सिमेट्री अच्छी दिखती थी, ये जो गुलाब का फूल है ये यहाँ से आना चाहिए था, यहाँ से आना चाहिए। We don't expect that, we don't create that thought, right? Why? Because we think that it is as it is, क्योंकि ये तो नेचर ने बनाया है ना, ये हमने हमारे वजह से नहीं बनाया, ये नेचर ने बनाया है, राइट? ग्रेट। सो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम किसी पेड़ की तरफ देखते हैं, फूल की तरफ देखते हैं, फल की तरफ देखते हैं और हमें ऐसा लगता है ये जैसा बना है वैसा है, हम कभी ये नहीं कहते ये आम का शेप ये इस तरह से क्यों है, ये पूरा राउंड होना चाहिए था। वी डोंट क्वेश्चन दैट, वी डोंट क्वेश्चन कि ये वाटरमेलन जो है ये स्क्वायर क्यों नहीं है या रेक्टेंगल क्यों नहीं है, वी डोंट क्वेश्चन दैट, वी एक्सेप्ट इट एज इट इज। सो द की पॉइंट हियर इज, if trees, plants, leaves, flowers, fruits are a part of nature, then you are also a part of nature. Human beings are also a part of nature. And so they cannot be perfect. And once we have this awareness, once we have this understanding, we will drop all our complaints instantly. They are not perfect, that's okay. Every person has good and bad. Proportion can vary, but every person has good and bad. And if we keep on being dissatisfied, we keep on looking for that perfect person, then that perfect person will never arrive in your life, because there is no thing as perfect that exists in this whole world. So whatever it is perfect as it is. So this glass of water is perfect as it is, even if it has water half full, but then half of the glass is filled with air. We have to just be aware, we have to just feel it. And how will we feel it? Let's see. And what will happen if we don't do that? We will be alone, we will be in that zone of loneliness, even if we have all the relationships around us. And if we are alone and there is no person around us, what is the use of being interested in art? What is the use of creating a painting if no one could see it? That means there is no one to share any joy with you. Then will you feel really fulfilled? Absolutely no. So what is the solution? That we will find out in this chapter. What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another, because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it is vital that you understand how your relationships affect your life now. So, most of the joy in our life is derived from the moments with our family members, right? And if there are no people in our life, then we will not be able to share and experience joy, love, enthusiasm, right? So how they are to receive the life of your dreams, it is vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. So, according to the research, this conclusion comes that people who practice gratitude have better relationships. So, this means scientifically, क्या होता है हमारे ब्रेन में जब हम grateful होते हैं? When we express gratitude towards other people, तो हमारे ब्रेन में ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जिसमें हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स मतलब एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं, और जब आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं दूसरे लोगों के लिए, तब आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो इंप्रूव होता है, उसका सिक्रेशन इंक्रीज होता है। एंड ऑक्सीटोसिन इज द सेम हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ बॉन्ड between people.
It is the same hormone that is secreted in mother's brain when she feeds her child. So oxytocin hormone is responsible for the bond that you create with your loved ones. और ये तब secret होगा जब आप उन लोगों के बारे में कुछ ऐसा सोचेंगे जिससे आपको उनकी जो प्रेजेंट क्वालिटीज है जो है और आपको अच्छी लगती है उस पर आप फोकस करेंगे. So being grateful to your family members or to your loved ones doesn't mean that you have to lie to yourself. अगर genuine gratitude means, हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो बच्चा है वो सुबह नहीं उठता है, तो saying that I'm grateful that my child wakes up early will create a disbelief. It will create a contrasting thought. But if you just look at other aspects of your child, that he is sincere or he helps you in certain tasks in your daily routine, then you can focus on that for what you are grateful for, and it is really present. Because when you are grateful for the things that are present, then the intensity of feeling will be more. You will be able to focus on that for a longer period of time. और जब आपका फोकस बढ़ जाता है तो आपका हार्मोनल सिक्रेशन भी चेंज होता है. जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके स्ट्रेस हार्मोन कम होके आपका जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है ना वो थोड़ा सप्रेस हो जाता है. क्योंकि आजकल सर्वाइवल मैकेनिज्म बिकम्स एक्टिवेटेड व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद पीपल. बिकॉज हमारा माइंड ये सोचता है कि जिन लोगों के साथ हमारी जमती नहीं है, दैट पर्सन इज अ डेंजर टू आवर लाइफ. So there is more secretion of steroid and adrenaline. Then we get angry thinking that why are they behaving in this way? Sometimes we express it in unfavorable way. Sometimes we suppress it. So both the things are not healthy for us. So there is no thing as anger management. It is only emotional management and self-management. And that will happen when you practice gratitude. So, but probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Imagine, this is like, ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा बर्डन है. Why? ये कह रहे हैं कि एक कंप्लेंट के लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं या सोचने हैं. हमने कितनी कंप्लेंट्स की इसका तो हिसाब किताब ही नहीं है. Right? Maybe there are 50, 100,000 or uncountable complaints about if you collect all the complaints of different people in your lifetime till now. There is no count. Can you imagine how that simple negative thought about our parents or about our siblings, spouse, parents-in-law or child had some impact in our life and their life? एंड देन वी वंडर कि मुझे इतना अकेलापन क्यों लग रहा है, मुझे आज डिप्रेस्ड क्यों लग रहा है, मुझे क्यों दुखी लग रहा है, क्यों मेरे उनसे जमती नहीं है. बिकॉज what you gave out in the past is coming back to you. Maybe through your expression of anger unknowingly, you must means that thought must have created some pain in their mind or heart, and now that energy is going to come back to you. And so this one sentence will keep you in awareness. Yeah, there is nothing to be fearful about, but remember that today is the best day and today is the new beginning. And everything is possible if you take responsibility to shift your mindset. So whether in thought or word. So complaint is not about कि आपने कुछ negative बोला है या नहीं बोला है. Complaint आपने बोला नहीं है लेकिन आपके thought में है तो वो भी energy है. Because अगर आपके words energy है, आपके thoughts और feelings भी energy है. There have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. Yeah, that is something which is really noteworthy, because people who are close to us, people with whom we spend the most time of the day, we see more flaws in them. Why? Because now our brain tries to look for any problem is there,
problem to solve, because your mind wants a problem to solve. If there is no problem in your life, if your life is smooth and fairly good, you are earning good money, your family is happy, still your mind will look for problems. And how will it look for problems? By looking for faults in people. And why does that do that? Because आपके माइंड को ना जॉब चाहिए, उसे काम चाहिए. अगर काम नहीं है तो वो काम ढूंढेगा. उसका काम क्या है? प्रॉब्लम ढूंढना. और फिर आपका काम बढ़ जाता है, क्योंकि वो जब प्रॉब्लम ढूंढता है तो आपको उसे फिक्स करना होता है. और जब प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है तब आपको लगता है दिस इज नॉट वर्किंग, आई वांट टू गेट डिवोर्स्ड. But then we don't know how we have also played an important role in that happening. How we have played that important role. We didn't recognize that our mind is playing tricks on us. And we were not able to see what was present in this half glass. हमें ये पानी दिख रहा था, हमें ऐसा लग रहा था कि ये ना काले रंग का पानी है, इनके अंदर बहुत फॉल्ट्स है. लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे थे कि शायद ऐसा भी कुछ है जो मैं नहीं देख पा रही हूँ, हम नहीं देख पा रहे हैं. और इसी वजह से बहुत बार ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत कॉमन होती है. व्हाई? पर्सन ए हैज समथिंग टू से एंड पर्सन बी थिंक्स दैट इसका मीनिंग कुछ ये है, लेकिन वो मीनिंग शायद नहीं है. और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बार क्लियर ही नहीं होती है रिलेशनशिप में, क्योंकि दोनों का ही नजरिया एक ही सिचुएशन को देखने का अलग अलग होता है, क्योंकि दोनों के पास अलग अलग फिल्टर्स है. मैं कह रही हूँ ये रेड है, और मेरे साथ जो बैठे हैं उनको ऐसा लगता है ये ब्लू है. और फिर कॉन्फ्लिक्ट ये नहीं होता है कि हम अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री कर रहे हैं कि या सोल्यूशन पे फोकस. हमारा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि आपको ब्लू क्यों दिख रहा है जब मुझे रेड दिख रहा है. एंड दैट डिसएग्रीमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन एवरी कम्युनिकेशन. और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं उनके बारे में ये अवेयरनेस होना, दे आर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे आर नॉट परफेक्ट, एंड दैट्स ओके. So instead of judging them as angry, irritated, frustrated, or slow, or not understanding, or they're bad cook, or they don't have this quality, they don't have that quality, they don't do this, simply know two things. Now these two tips are going to change your life. Just listen carefully. Number one is they are human beings, they are perfect, and that's all right. That's okay. They are allowed to be imperfect with us. Number two, this is not me who is thinking about them in this way. This is my mind, which is trying to find out problems so that it stays employed. Your mind doesn't like to be unemployed. So when you take responsibility, you change the job of your mind. Okay, you want work, I will give you work. It's like a child. छोटे बच्चे को अगर आप कुछ खिलौना नहीं दो तो वो क्या बोर हो जाता है. वो क्या करेगा? वो इरिटेट होगा, हाथ पैर मारेगा, चिल्लाएगा और आपका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेगा. करेक्ट? या फिर कुछ तो सामान इधर से उधर कर देगा, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. लेकिन अगर आप उसका फेवरेट खिलौना उसे दे दो, वो शांत हो जाएगा. उसी तरह हमारे माइंड को भी हमें कुछ काम देना है. तो क्या काम देना है? तो उसे कहना है कि अभी यस उनके अंदर बहुत फॉल्ट्स है, लेकिन आज मुझे उनके अंदर कोई अच्छाई ढूंढनी है. प्लीज हेल्प मी. एंड व्हेन यू से दैट आई वांट टू लुक फॉर सम गुड थिंग्स इन दिस पर्सन, योर माइंड इज एम्प्लॉयड नाउ. योर माइंड इज हैप्पी. अभी आपका जॉब बहुत आसान हो गया. तो रिमेंबर, योर माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट and a terrible master. A terrible master. And when it becomes your master, it destroys your relationships. This simple awareness will change your life. This simple awareness will change your relationships. Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you'll magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. If you do this practice of gratitude, then you will feel more compassionate towards other human beings. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships
will disappear, because when you're truly grateful for another person, there is nothing you want to change about the person. You want to criticize, complain about, or blame them because you're too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. Can you feel these sentences? जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर का जो अर्ज है ना, क्रिटिसाइज करना या कंप्लेन करना या ब्लेम करना, ये अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड अभी अपना जॉब चेंज कर रहा है. एंड यू आर हेल्पिंग योर माइंड टू चेंज इट्स जॉब बाय गिविंग इट अ न्यू जॉब ऑफ काउंटिंग ब्लेसिंग्स. सो व्हेन यू लुक फॉर गुड इन पीपल, देन धीरे धीरे ऐसा होगा, आपका क्रिटिसिज्म करना कम हो जाएगा, कंप्लेन करना कम हो जाएगा, ब्लेम गेम बंद हो जाएगा. अभी आप ही सोचिए, अगर आपके पास चॉइस है, दो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर वन पर्सन, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीवन इन योर लाइफ. दो पर्सन हैं, आपको कहा है कि आपको 4 दिन इनके साथ बिताने हैं. उसमें से एक पर्सन ऐसा है जो बहुत ही क्रिटिसाइज करता है और ब्लेम गेम कंप्लेंट भी कर सकता है, लेकिन उसका इंटेंशन है आपको इम्प्रूव करना. और दूसरा पर्सन ऐसा है जो आपको अप्रिशिएट करता है, आपको गुड टाइम देने की कोशिश करता है. देयर इज नो ब्लेम गेम एंड देयर इज कंस्ट्रक्टिव सजेशंस बट नॉट क्रिटिसिज्म. सो पर्सन ए is the one who criticizes, person B is someone who appreciates and only believes in constructive suggestion. आप किसके साथ वो 4 दिन बिताएंगे, पर्सन ए या पर्सन बी? Type in the chat box so that I know what you think. Person A. So you want to improve yourself and you like criticism, right, Shaurya? Constructive suggestion person. Person B. Okay. Okay. Person B. Okay. Okay. I really appreciate the Shaurya for choosing person A. That shows that you have a lot of strength, but most of the people in the world will definitely choose person B because everyone likes to be appreciated. And there is this innate need of every human being. Every human being has that innate need to get understood and to get appreciated. And when you do that for others, they feel happy and joyful in your space. But what is the sad part? The saddest part of our life is that our culture didn't teach us to appreciate others multiple times a day. क्योंकि हमें बचपन में ये बताया गया कि अगर आप ज्यादा तारीफ मत करो, नहीं तो वो चने के झाड़ पे चढ़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी. What was that problem? We don't know what that problem was, but we were told or we were taught not to appreciate other people as much, right? And that's why we are not wired to practice gratitude and appreciation for other people. But then we don't want to play any blame game. We don't want to blame our culture. We don't want to blame our country. We don't want to blame our ancestors. We will take responsibility today and now because we are alive and we have taken responsibility to create breakthrough in all the areas of our lives, right? So we can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Thornton, Wilder, writer and playwright. So he wants to say that हम तभी जिंदा दिली महसूस कर सकते हैं जब हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, वो कॉन्शियस होता है अपने ट्रेजर के लिए. तो कौन सा ट्रेजर है? When you are compassionate towards others, तो आप you open your heart, right? So compassion, gratitude, love, all these things come from your heart. But now listen closely. When you are thinking too much from here, मतलब आप अपने माइंड को जब बहुत ज्यादा एक्टिवेट करते हैं, आप लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, दैट टाइम ऑटोमेटिकली आपका जो हार्ट का ट्रेजर है ना बंद हो जाता है. और इसीलिए ये जो कंप्लेंट्स है या क्रिटिसिज्म है या दूसरों के फॉल्ट निकालना है, ये काम आपका हार्ट नहीं कर रहा है, ये आपका काम माइंड कर रहा है. एंड यू आर नॉट योर माइंड. तो जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, यू फील कंपैशन फॉर अदर्स, ऑटोमेटिकली यू कम टू नो द ट्रेजर्स ऑफ योर हार्ट. You open your heart, and this is the time when you really live fully
You are born here to live fully, and that is possible only when you experience joy and love, right? So words are very powerful. When you complain about any person, you actually harm your own life. जब आप कंप्लेन करते हैं किसी पर्सन के बारे में, तो आप खुद की लाइफ को हार्म करते हैं. इट इज योर लाइफ दैट विल सफर. बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वॉट एवर यू थिंक और से अबाउट अनदर पर्सन, यू ब्रिंग टू यू. अभी इसमें ना एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट हो सकता है. इसका मतलब आपको ये कहना है कि अगर किसी का बिहेवियर ठीक नहीं है तो हमें उनको कुछ बोलना ही नहीं है. मतलब बच्चों ने अगर कुछ गलत किया या उनके लिए वो सही नहीं है, फिर भी हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को उन्हें कुछ बोले ही नहीं. या फिर हमारे हस्बैंड का या वाइफ का हमें अगर कोई पर्टिकुलर क्वालिटी ठीक नहीं लग रही है, we have to tolerate it. No, you don't have to tolerate. The answer to this question is that if you can be realistic, then you will not be a victim of any misunderstood phenomena of gratitude. Gratitude doesn't mean that you should not create solutions. If there is one problem and you think that this person has an important role, तो हम एक बहुत ही सुंदर ऑप्शन है. वी कैन लुक एट द सिचुएशन प्रॉब्लम टुगेदर. और सबसे पहले तो जरूरी है हम उन्हें ग्रेटिट्यूड और अप्रिशिएट करें उनकी अच्छी क्वालिटी के लिए, और फिर उनके साथ पार्टनरशिप क्रिएट करें. हाँ बेटा, आई अंडरस्टैंड कि आपको ना, आप थोड़ा लेजीनेस फील करते हो या आप थोड़े स्पीड में स्लो हो, ऐसा आपको लगता है. आई अंडरस्टैंड दैट. लेकिन ये आप नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है. तो इस प्रॉब्लम मतलब अब ये दोनों, आप दो लोग अलग है और ये प्रॉब्लम अलग है. अब ये प्रॉब्लम है ना, ये पर्सन से डिसोसिएट हो गया है. यू आर नॉट ब्लेमिंग द पर्सन, दिस इज वन प्रॉब्लम एंड लेट्स वर्क ऑन इट टुगेदर. क्या होगा जब आप इसको, ये जो है, ये अगर आप इसको, इफ यू गेट रिड ऑफ इट, हाउ विल योर लाइफ लुक लाइक? आप क्या चाहते हो? I promise you that your child or any other person that you're talking to will come in the state of readiness to work upon the problem. लेकिन अगर आप ब्लेम गेम में जाते हैं तो then there is no end, because even you blame them as if they and their quality, they and their doings are same, then they also have another list to blame you. So it is give and take, and this game will never end, never end. And that's why this is the reason why there is a distance in between two people in the same family, because problem and unfavorable quality becomes part of the identity of that person, which is not the truth. Because अगर एक बच्चा है, अगर 15 साल की उम्र में वो लेजी है, लेकिन 25 साल की उम्र में वो बहुत काम कर रहा है, तो लेजीनेस जो है वो उसकी आइडेंटिटी कैसी रही? वो लेजीनेस तो छूट गया ना. मीन्स he just let it go, he got rid of it. So that laziness was temporary. It was temporary. It was not a part of his identity. It was not permanent. So if you think that there is some bad quality, there is something which needs to change, then remember that it is not the identity of that person. You can just partner with them. You can use this tool of gratitude by showing gratitude towards them, by appreciating them for what they are doing, and then partnering with them to look at the problem in a constructive way by giving them constructive suggestions and having compassion for them, working upon it, taking action for it. This way, they also get driven to work upon that problem, right? So, I hope you understood the real meaning of gratitude and compassion and tolerance or intolerance. If not, you can type in the chat box so that we can discuss about it even more after some time. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? Now imagine someone is there in your life, the person you love the most. They come to you and they say to you, I love you just the way you are. Just imagine for a few moments. How do you feel right now? Absolutely relaxed, right? No guards, no defenses, no anger, and you feel freedom in their space, correct? You feel great, right? We all are human beings.
If we feel good when someone says that I love you the way you are, then they also will feel good if we create that energy for them. So I love you are not just the words to say. It is about creating that space of freedom of expression for other people to be the way they want to be. And that will happen only if you drop your judgments, you drop your opinions about them, and you just love them the way they are. Ultimately, at the end of the day, they are human beings. They are not perfect. You are also a human being and you are not perfect. Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase, they will they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. So, choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, your father, or your boyfriend, your business partner, or your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or both of you together. I hope you have those photos together, photos with you, and then you have to just focus on that photo, look at them, and think about good times you had with them, or think about good qualities they possess. Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are the best qualities? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको इनमें बहुत ज्यादा पसंद है? इनकी बेस्ट क्वालिटीज कौन सी है? हो सकता है कि आज तक आपने इन सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड लिया है, या आपको लगता है हाँ है तो है, उसमें क्या है, सब में ही है. So this is for taking, this is like taking for granted. लेकिन अगर हम उस चीज के पे फोकस करते हैं, thinking that this is special about them, then you will feel that this quality is special and genuine gratitude will flow through your heart. You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. Can you see? There are so many things that are mentioned here. और बहुत बार हम इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं. तो अब क्या होगा, when you have to look for these good qualities, आप और ज्यादा ऑब्जर्वेंट होंगे. जो चीजें आपको अब तक ऐसा लग रहा था कि मैंने देखी नहीं, वो आपको दिखने लगेगा. You will get a lot of disconfirming data about people you love the most and about people with whom you are living, staying every day. Or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about that person, put their photograph in front of you, and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words, thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. For example, thank you, their name, for maybe they are sincere, maybe they supported you when you were in a tough time, maybe they listened to you when you were angry and not in a very comfortable and good mood. Still, maybe they forgave some mistake of yours. So whatever good thing was there, just look for it. Dig in till you get gold. For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for supporting me through college. आप अपने माता पिता का धन्यवाद कर सकते हैं कि थैंक यू मम्मी, आपने इतने सालों तक मेरे लिए रोज खाना बनाया. आप पापा के लिए थैंकफुलनेस एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उन्होंने आपके एजुकेशन के लिए जो भी खर्चा है वो किया, या ही ट्राइड his best to provide you everything. So whatever comes to your mind about them, make sure that you go on writing 5 to 10 gratitude, not just one.
When you have finished your list for all the 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words thank you and the person's name. Thank you, Haley. तो ऑथर सेज दैट आपको इन तीनों फोटोग्राफ्स को साथ में कैरी करना है. अभी आप बताइए आजकल हम सबसे ज्यादा क्या कैरी करते हैं? ऑफ कोर्स हमारा मोबाइल, राइट? सो हम ये काम कर सकते हैं कि जो 3 लोग आपने चुने हैं उनका आप एक वॉलपेपर बना सकते हैं एंड यू कैन जस्ट सेट एज अ वॉलपेपर ऑन योर फोन. और जब भी आप फोन खोलेंगे तो आपको ये तीनों दिखेंगे. और जब भी आप उनको देखेंगे तो उनका नाम लेकर उन्हें थैंक यू करना है, धन्यवाद करना है दिन भर में. मतलब अगर आज का दिन हो जाता है तो आप ये कल करेंगे, लेकिन मेक श्योर दैट आप ये असाइनमेंट आज रात को सोने से पहले या कल सुबह कर लेते हैं. Which assignment? Writing gratitude towards these people. If you are moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to make this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. जितना आप ग्रेटिट्यूड ज्यादा व्यक्त करते हैं, जहाँ महसूस करते हैं, उतना ही ज्यादा आपकी रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा मिराक्युलस चेंजेस हो सकते हैं. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रोज करना चाहिए क्योंकि एक कोई रिलेशनशिप है जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, तो आप उस तरह से कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि तीनों रिलेशनशिप को साथ में लेना है, मतलब आफ्टर दिस असाइनमेंट यू कैन डू दैट. सो वट एवर यू फाइंड कंफर्टेबल एंड सूट्स योर लाइफ, यू कैन डू दैट. अगर आपको ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो मेक दिस असाइनमेंट, मतलब ये जो प्रैक्टिस है ये आप रोज भी कर सकते हैं बाय लुकिंग एट देम एंड ट्राइंग टू बी क्रिएटिव विद ग्रेटिट्यूड. अगर आप रोज ही 10 ग्रेटिट्यूड सेम लिख रहे हैं, यस माय स्पाउस इज सपोर्टिव, माय स्पाउस डज दिस, सो अगर आप रोज करेंगे तो आपके ब्रेन को उस चीज की आदत हो जाएगी. देन यू विल नॉट फील दैट इंटेंसिटी ऑफ इमोशन. बेटर यू लुक फॉर न्यूअर एंड न्यूअर थिंग्स. Magic practice number 3, magical relationships. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. So, आपको ये जो नंबर 1 की प्रैक्टिस ये तो करना ही है, ये कंपलसरी है. काउंटिंग योर ब्लेसिंग. रोज सुबह उठने के बाद आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं एंड राइट व्हाई यू आर ग्रेटफुल. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. 3 कोई भी रिलेशनशिप को सिलेक्ट करना है and with the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person. तो आपको 3 लोग हैं तो हर एक पर्सन के लिए 5 ग्रेटिट्यूड सेंटेंसेस लिखने हैं. सो कैन यू सी दैट 10 ग्रेटिट्यूड से बेहतर 5 ही लिखने हैं, 5 ही लिखने हैं. लेकिन अगर आप रोज 5 लिखते हैं, अगर आपको एक रिलेशनशिप पकड़ना है, आज आप ये 3 रिलेशनशिप का असाइनमेंट करने के बाद अगर आप कल से सिर्फ एक पर्सन को पकड़ लेते हैं, उसके लिए अगर 5 ग्रेटिट्यूड रोज लिखते हैं एंड बीइंग क्रिएटिव विद इट, you will definitely see a magical shift in your relationship. Because when you write gratitude, first it creates a magical change in you. Your energy changes, your aura changes, and it gets reflected in your behavior. The way you treat them, you will respect them more. Your actions will be gentle, and then you will get the same in return from them. And that's why relationship gets improved. Begin each sentence with the magic word thank you. Include their name and what you are specifically grateful for. So, thank you, Mom, for cooking food for me. This is just an example. Carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic words thank you and their name. Thank you, Haley. So, अगर आपके मोबाइल में वो फोटो है तो उनकी आंखों में आंखें डालकर, मतलब उनके फोटो के, और फिर उन्हें थैंक यू कहना है. उनके बारे में जो भी आपको अच्छी चीज
कि मेमोरी है, उस बारे में सोचना है। ये जो असाइनमेंट है, इसमें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप उनके पास जाकर ये कहें। ये आप खुद के ही साथ, और आपके पास जो प्रॉप्स है, जो फोटोज है या मोबाइल है, उसमें भी आप करते हैं, स्टिल यू कैन चेंज योर रिलेशनशिप। सो वी थिंक दैट रिलेशनशिप तो दो लोगों की है, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना है, देन यू आर मोर देन इनफ। You can create anything you want in your life. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Magic rock practice मतलब आपको magic rock लेना है और सोचना है कि दिन भर में क्या क्या अच्छा हुआ है। So this is all about relationships. रिलेशनशिप के बारे में हम जितना भी बात करेंगे उतना कम है। Why? Because human mind is complex, it is unpredictable and it is dynamic. So वैसे देखा जाए तो ट्रुथ ये है कि सिर्फ 1 घंटे के प्रोग्राम में हम हमारे माइंड का रिवायरिंग नहीं कर सकते, लेकिन इफ वी आर अवेयर, 2-3 पॉइंट्स के बारे में अगर हम अवेयरनेस रखते हैं, तो हमें ग्रेटिट्यूड, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना थोड़ा पहले से आसान हो जाएगा। Otherwise, working on relationships is an ongoing process. It is never going to end because life is a journey, and in every area we are dealing with some or other relationship. In money, we are dealing with relationship with people because you are earning money through other people. In your family, you are dealing with people. In your health, you are dealing with yourself. So it is relationship with you. So life is about relationships. This is what I believe. So this is all for today, and I open this platform to ask any questions if you have. If you have any questions, it's good. Yes, Sony, please. The 3 relationships for which we have to offer gratitude, should they be good ones or the damaged ones? Preferably the ones where you want to create a breakthrough in. If you think that अच्छा ये रिलेशनशिप है तो अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल बहुत बार हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा अच्छा होता है, या फिर इफ यू थिंक दैट इट्स गुड रिलेशनशिप यू आर हैविंग विद योर हस्बैंड, बट यू थिंक दैट ये इसमें और एक नेक्स्ट लेवल होना चाहिए और ये आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर आप उस रिलेशनशिप को पकड़िए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक है लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा डैमेज है और उससे मेरा पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, तो लेट मी एटलीस्ट ब्रिंग इट फ्रॉम नेगेटिव टू 0, तो आप उसको भी ले सकते हैं। सो देयर आर 3 options author has given you. Any relationship you can pick up and it will certainly elevate to the next level. Yeah, thank you very much for asking that question. Anyone else? Okay, so I believe that you are clear with the assignment, और मैं ऐसा मानती हूँ कि आप मैजिक रॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैजिक रॉक प्रैक्टिस इज रियली पावरफुल, इट इज पावरफुल इनफ टू चेंज द रिवायरिंग ऑफ योर ब्रेन। और आप अगर रिलेशनशिप का प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है ये भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिसेस है, क्योंकि सिर्फ ये एक प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपके आसपास के लोग आपको कुछ दिनों के बाद सवाल पूछने लगेंगे, आप या क्या खा रहे हो या कौन सा कोर्स कर रहे हो जिससे आपके बिहेवियर में इतने सारे बदलाव आए। बट देन दिस इज योर ट्रू सेल्फ, दिस इज नॉट समथिंग विच इज डिफरेंट, दिस इज योर ट्रू सेल्फ। अब तक जो आप कैरी कर रहे थे, criticism, anger, blame game, complaint, that was your smaller self which was active. So promise me that you will suppress your smaller self and activate your true self. Thumbs up? Yes, ma'am. Yes, very good. If you practice doing this and if you follow certain golden tips that you got from this session, then Yes. I promise you that you will be a different person and you will experience more joy and love in your relationship. And relationships really make you feel purposeful or meaningful in a marriage or in family, right? If it is not working, you feel lost. So it is worth trying. And this assignment is not going to harm you or your family members. Don't worry. Go on and try it on. So take care, a good night, and sleep well. Make sure that you do your magic rock practice. Remember 2 things. Number 1 is tomorrow we have kal Sunday hai, tomorrow is a Sunday and we have planned a session to be conducted at 11 AM. कल हमने सोचा है कि ये जो सेशन है ये सुबह 11 से 12 बजे होगा, so that you all get an evening
for your family and with your family. तो कल सुबह 11 बजे आपको लॉग इन करना है, लिंक सेम रहेगी. सेकेंड, मेक श्योर दैट यू शेयर योर लर्निंग्स टुडे, बिकॉज आज का जो लेसन था इसमें बहुत सारी चीजें थी अलग अलग जो आज तक हमने सुनी नहीं या फिर हमने फील नहीं किया, समझे नहीं. तो जब आप लिखते हैं तो आपका एक रिवीजन हो जाता है, और जब आप खुद का लिखा हुआ पढ़ते हैं तो वो आपके ब्रेन में फिट हो जाता है. यू ऑल्सो गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम अदर पीपल हु गेट टू रीड योर नोट्स. Maybe they are not reacting, but they are getting something from you. So thank you very much for your patience, for your open mind, for understanding people around you, and for practicing compassion and gratitude. Keep smiling and keep shining. Take care and bye-bye. Thank you, ma'am. Thank Thank you. you. Thank you.